angle should be like this, so that your vision falls like this. If you are able to see the orbit, the eyeball coming out, then if the patient has a big residual goiter when you are stopping the drug and the antibody levels are still high, so these are bad prognostic signs in the sense that they are more likely to. We are here to discuss the approach to the next study given by Dr Vevek Rana Sir, Professor, Dr Vevek Hospital. What were her presenting complaints? She was presented with the weight loss, significant documented weight loss, and in the last 1.5 years, she loses 35 to 40 kg. We had discussed this patient yesterday. I do not know whether you people were there on the rounds or not. She came to us with a weight loss of around 20 to 30 kgs. In addition to that, she's also having diarrhea off and on. And on examination, she had tremors also. कागज है इसके पास. You can just make it more visible. And you see, the only thing is that if it is like this, and if by the law of physics or whatever you say, you can see these movements exaggerated in the exaggerated form if you put a paper, because the movement here will be more. So you can see there are tremors also. So now this patient, if you see the history, she has come to us with weight loss. She has come to us with diarrhea. She has come to us with, there was also a history of heat intolerance, and there are tremors also. And you can see there is a thyroid swelling here. So first of all, whenever there is a thyroid swelling, what all we have to see? First of all, whether the patient is euthyroid or hyperthyroid or hypothyroid. So what do you feel this patient is having? महीने वगैरह ठीक आते हैं, ज़्यादा कम है, उसमें कोई परेशानी है? कम है. भूख कैसी लगती है, ज़्यादा या कम? पहले से कम हो गई है. Normally hyperthyroid patient usually appetite increases, but we'll have to go and take a detailed history कि पहले कितनी खाती थी, अब कितनी खाती है. Because there is a psychogenic component also. Most of the patients who lose weight, they will say कि this, so you should take a detailed history. Now पहले कितनी खाती थी, क्या कितना था, ऐसे होता है. पानी है पीने के लिए, एक बार फूक सटको. And you see this is moving upwards. So this goes in favor of a thyroid swelling. And then ideally you should ask her to sip water also. It's the same movement you can feel. And ideally speaking, you should be palpating the patient from behind, back. Posteriorly you should be doing that. But moment so now just on this basis, whatever little information we have, so what we feel is that this patient has a thyroid swelling. And this patient has history which is suggestive of thyrotoxicosis, hyperthyroid. है ना, क्योंकि इसको ट्रेमर्स भी आ रहे हैं, इसको वेट लॉस भी है, इसको डायरिया भी है. So all these things are going into favor of thyrotoxicosis. अब now thyrotoxicosis, what is the cause of thyrotoxicosis? First of all, we will just palpate. We are sure it is a thyroid gland now, most likely, and now we will be palpating it, whether what type of gland it is, whether it is a multinodular or it is diffusely enlarged, or there is a single nodule, which definitely it is not, because you can see the swelling on both sides of the neck. And then we will check for bruit also. What happens is, if the gland is hyperfunctional, so definitely it is working more. The medicine is simple. आपको तो simplify करना आना चाहिए. Complicate करना तो बहुत आसान है. A gland which works more will be needing more amount of nutrients. So it will be needing more amount of blood. So an enlarged gland, if there is a bruit, most likely we are dealing with a gland which is hyperfunctional. It is not a fibrotic gland. कई बार होता है कि बहुत बड़ा हो गया, फिर उसी में फाइब्रोसिस हो गया, या उसी के अंदर कुछ हेमरेजेस मल्टीनोड्यूलर हो गए, तो उसमें इतनी ब्रूई नहीं आती. So if there is a bruit, then most likely we are dealing with a hyperfunctional gland. It's question of probability. जैसे मेडिसिन में मैं repeatedly बोलता हूँ, there is nothing 100%. But yes, then it becomes more likely to be a hyperfunctional gland. अच्छी खासी ब्रूई है, आप बाद में देख लेना इसके बाद. अच्छा, जब आप खाना खाते हैं, अटकता तो नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है खाना अटक रहा है, या कभी किसी खास पोजीशन में लेटने पे, ऐसे करने में सांस आने में दिक्कत होती है, आवाज आने लग जाती है सांस में. So whenever there is a neck swelling, first of all we also have to see whether there are any compressive symptoms or not. So she is not having any signs of compressive symptoms.
So now there are two things. First, whether this gland is hyperfunctional, hypofunctional, or the patient is using. So first information, most likely we feel this function, this is a hyperactive gland. Secondly, what is the cause of this hyperactivity? Hyperactivity means you can have a multinodular goiter, you can have a single toxic nodule, and you can have a diffusely enlarged nodule. So it is not multinodular. If you feel it is a diffusely enlarged soft gland and there is a bruit there. And so most likely we are dealing with a diffusely enlarged. So now what is the cause of diffusely enlarged goiter with a bruit and patient is having symptoms of hyperthyroidism? So most likely we are dealing with Graves' disease. Yes, because it is fitting into Graves' disease. So now most likely we are dealing with Graves' disease. Now the diagnosis of Graves' disease can be made by, there are certain blood investigations, or if there are peripheral signs of Graves' disease. Now two things. A person who has come to us with thyrotoxicosis, we have to see two things. First of all, we have to see the peripheral signs of hyperthyroidism, irrespective of the cause. अगर उसने 10 गोली थायरोक्सिन की भी खा ली है तो साइंस आएंगे, और ग्रेव्स डिजीज आती साइंस आएंगे if it is hyperfunctional gland. So first of all, we have to assess two things. First is the peripheral signs and symptoms of thyrotoxicosis. Secondly, the peripheral signs and symptoms of Graves' disease. So if a patient takes 10 tablets of thyroxine, I'm just giving an example, and the patient has been taking it regularly, a dose of thyroxine, उसको गलत फहमी हो गई, वो उसको शुगर की दवाई सोच के डेली खा रही है. So will she develop dermopathy? Will she develop orbital signs of Graves' disease? No. So if a person who is having a diffusely enlarged this and the patient has signs and symptoms of orbitopathy, जो भी आपके eye signs हैं, जिसमें आपका lid lag, multiple जो भी आपके signs हैं, so if those signs are present and there is a diffusely enlarged goiter and patient has thyrotoxicosis, so I think even without lab investigation, so definitely we are going to get them done. Our diagnosis is secure. Most likely we are dealing with Graves' disease. So जब भी ऐसा पेशेंट आएगा, we have to look for two things in periphery. One, signs and symptoms of thyroid, irrespective of the cause. Hypo है, hyper है या क्या है, and to look for the cause, specific cause. Most likely Graves' disease ही होता है इस age में. So does this patient have any peripheral signs and symptoms suggestive of Graves' disease? Yes. क्या है? I'm talking about thyrotoxicosis. Thyrotoxicosis she has. She has a tremor, she has excessive sweating, she has diarrhea, she has weight loss, बाकी skin वगैरह texture वो भी अभी देख लेते हैं, reflexes देख लेते हैं, no doubt about that. Lid lag is not for Graves' disease, it is for thyrotoxicosis. आप देखो बहुत सुंदर देखो, आई साइंस के लिए आप इनको डिमोन्स्ट्रेट कर दो, क्या सर ऑल आई साइंस, हाउ टू लुक फॉर प्रोप्टोसिस, पीछे से देखना है कि योर एंगल शुड बी लाइक दिस सो दैट योर विजन फॉल्स लाइक दिस. इफ यू आर एबल टू सी द ऑर्बिट, द आई बॉल कमिंग आउट, so then most likely the patient is having proptosis. But here you cannot see that. सामने से भी obvious था, but this is the proper way of seeing this. So अब आज के मैनेजमेंट पे ग्रोसली आ जाते हैं. So one, what are the things which are clear to us right now? It's not a very thorough or a comprehensive class on thyroid. It's just a bedside teaching type का ही है. So one is she is having hyperthyroid. Second is most likely she has a Graves' disease. But we are not able to find any peripheral evidence of Graves' disease. So our diagnosis, though most likely it is Graves' disease only, but अगर हमें orbital signs मिल जाते और ये मिल जाता, then it would have been Graves' disease even without आपका जो बाकी जो आपके markers हैं उनके बिना हो गया. So now what are we going to do? एक बार मैं दोबारा समराइज कर दूं. फर्स्ट, वेदर द पेशेंट हैज अ नेक स्वेलिंग, यस शी हैज. दिस नेक स्वेलिंग इज थायराइड और नॉन थायराइडल, यस इट इज थायराइडल. दिस नेक स्वेलिंग इज दिस थायराइड इज मल्टीनोड्यूलर और अ सिंगल नोड्यूल और डिफ्यूजली एनलार्ज्ड, इट इज डिफ्यूजली एनलार्ज्ड. तीन चीजें क्लियर हो गई. नाउ दिस ग्लैंड जो है इट इज हाइपो, नॉर्मो और हाइपर फंक्शनल. एक तो ब्रूई आ रही है, मोस्ट लाइक हाइपर फंक्शनल, एंड देयर आर पेरिफेरल साइंस ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस. सो इट मींस दिस ग्लैंड इज ओवर प्रोड्यूसिंग थायरोक्सिन. तो ये सारी चीजें हमारी अभी इतने से में क्लियर हो गई. उसके बाद में व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिफ्यूजली एनलार्ज्ड? मोस्ट लाइकली बिकॉज यंग फीमेल है, ग्रेव्स डिजीज में फिट बैठ रही है, बट पेरिफेरल साइंस ऑफ ग्रेव्स डिजीज हमें नहीं मिलेगी.
कोई हमें टर्मोपैथी नहीं मिली है, कोई हमें ये ऑर्बिटल साइंस नहीं मिले हैं। वाई वी गेट? बिकॉज द एंटीजन विच इज प्रेजेंट हेयर and against which the antibodies work, those same antigens are present in the periorbital tissues. तो वो एंटीजन जो एंटीबॉडी यहाँ काम कर रही है वो यही काम करती है। तो दैट इज वाई इट इज एन एंटीबॉडी मीडिएटेड डिजीज। तो वो यहाँ पे भी करती है और यहाँ पर भी करती है। दैट इज वाई वी हैव साइंस एंड दैट इज वाई व्हेन यू गिव लेवोथायरॉक्सिन इट विल नॉट अफेक्ट, बिकॉज वहाँ पे एंटीबॉडी तो वो वाली है ही नहीं, एंटीजन तो वो वाला है ही नहीं, तो वो नहीं होगा। नाउ हाउ टू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट? LFT, KFT वगैरह वो है। Yes, sometimes these patients have multiple endocrine neoplasia, rare thing. तो हमें बाकी भी देखना पड़ेगा, कोई और autoimmune disease तो नहीं है। Pernicious anemia is more common in these patients. Vitiligo is more common in these patients. There is a syndrome जिसके अंदर diabetes is also more common. तो कुछ और थायराइड के अलावा कुछ और ग्लैंड या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, एक हमें वो एसोसिएट करना पड़ेगा। दूसरा, थायराइड की जो टॉक्सिसिटी है वो कितनी ज्यादा है, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, सो दैट वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली, है ना। और कॉज, क्या कॉज है? तो ये थायरोटॉक्सिक है और ये मोस्ट लाइकली हैविंग ग्रेव डिजीज। तो एक हमें FT3, FT4, TSH इनिशियली हमें तीनों ही करानी चाहिए। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज अ हाई FT4, अ हाई FT3 एंड अ लो TSH, एंड देन वी कैन गो फॉर ट्रैप्स, thyroid receptor antibodies. They can be stimulating also, go and attach to the receptor and stimulate the thyroid to produce more, and sometimes they can be blocking also, वहाँ जाके वो ब्लॉक कर देती है। अब नाउ द पार्ट 2 ऑफ द थिंग इज कि हाउ टू ट्रीट दिस पेशेंट। बाकी KFT, LFT वो तो हम कराएंगे, ECG भी होना चाहिए, बट ये होना चाहिए। एक थायराइड आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, विच विल टेल यू कि इट इज अ डिफ्यूजली एनलार्ज्ड हाइपरवैस्कुलर गोइटर। थायराइड स्कैन भी पीपल कैन गेट इट डन, बिकॉज उसके अंदर आपको लगेगा कि डिफ्यूजली इंक्रीज्ड अपटेक है, बिकॉज इट इज हाइपर फंक्शनल ग्लैंड, वो ज्यादा आयोडीन लेगा अंदर। तो आप थायराइड स्कैन करा सकते हो, अल्ट्रासाउंड करा सकते हो टू सी द हाइपर फंक्शनिंग ग्लैंड, और इसकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी देखने के लिए वो आप करा सकते हो। नाउ वी हैव 3 मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, है ना। वन इज रेडियो आयोडीन, वन इज सर्जरी एंड थर्ड इज ड्रग्स। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट वो है, यूरोप में डिफरेंट वो फर्स्ट लाइन यूज करते हैं, उसमें डिफरेंट फर्स्ट लाइन यूज करते हैं। बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड हियर प्रैक्टिकली, आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल जो हम लोग करते हैं, नॉट व्हाट इज गिवन इन द बुक्स। What I have seen is कि so many times I have referred the patient कि यार young patient है, इसको रेडियो आयोडीन दे दें, but वो देते नहीं है। Most of the time the patient is referred back. So if the patient को compressive signs नहीं है और अभी कोई pregnancy वगैरह नहीं है, तो usually what we do here is we start the patient on carbimazole या neomercazole, जो भी हमारे पास brand name से आती है। So what we do is we put the patient on the dose which you can start is around 20 to 40 per day. So depending on कितना severe है, कितना क्या है। So supposing we have started the patient on 10 mg BD or 10 mg TDS, so then you can keep on monitoring. Initially you have to monitor with FT4 until unless patient has a thyrotoxicosis T3. बहुत रेयर होता है कि T3 thyrotoxicosis, कि T3 बढ़ा हुआ है, T4 नहीं बढ़ा हुआ, बहुत रेयर होता है। तो आपको FT4 से करना है। नॉर्मली जब हम हाइपोथायराइड करते हैं तो हम करते हैं TSH से करते हैं। तो हम हाइपर क्यों नहीं करते TSH से? हाइपर में हम FT4 क्यों यूज करते हैं? Yes, because once the patient has chronic thyrotoxicosis, the TSH remains suppressed for a long period of time. So even when the FT4 becomes normal, the TSH will remain suppressed. But over a period of time, TSH will normalize. So once the TSH normalizes, then you can use TSH for monitoring the therapy. But till the TSH normalizes, then तब तक आपको FT4 रखना है. And FT4 you can keep in the lower half of the normal range. मान लो यहाँ से यहाँ है तो आप somewhere in the lower half में आप उसको रख सकते हैं। अब now dear, all these anti-thyroid drugs take some time to act, है ना, कुछ weeks लग सकते हैं। Normally you can say कि some amount of benefit occurs in majority of the patient within 2 weeks. 2 week के बाद patient बोलेगा कि हाँ I'm feeling bit better, कि appreciably patient को लगेगा कि कुछ मेरे को फर्क पड़ा। So till that time, if the patient is having severe tachycardia, palpitations, dhak-dhak की feeling, tremors, so for that period of time we can give a non-selective beta blocker, like a propranolol. तो उससे आपका tachycardia भी कम हो जाएगा, palpitations भी कम हो जाएंगी, tremors भी कम हो जाएंगे। तो to start with, if there is no contraindication, initially you can add a beta blocker, propranolol, 20 mg TDS to start with, and then you can increase the dose 120, 240 तक हम कर सकते हैं, because hyperthyroidism is a beta blocker become less effective अगर हम thyrotoxic हैं। So then you have to gradually reduce the dose. Once the patient becomes euthyroid, तो then आप उसको बंद कर सकते हैं।
Now the part 2 of the story is when to stop. Because most of these patients are young. तो आप कब तक दोगे? What normally we do is once the patient becomes euthyroid, we continue the patient on treatment for around 80 to 24 months. उसके बाद we start tapering the drug, but almost half of the patients will relapse. Different series में different है, किसी में 30% relapse है, किसी में 70% भी relapse है, but मैं generally कहता हूँ कि half of them will relapse. If the patient has a big residual goiter when you are stopping the drug and the antibody levels are still high, so these are bad prognostic signs in the sense that they are more likely to relapse. If the thyroid gland is smaller and the antibodies are low titer or they are not present there, then it is more likely that she will not respond. So once you stop the medicines, तो तब उसके बाद में फिर आपको पेशेंट को फॉलो में रखना है. ये नहीं कि तू ठीक हो गई, लाइक टीबी की 6 महीने की दवाई खाई ठीक हो गई, घर जाना. You have to ask the patient to be in your follow-up, and you will have to see the patient and get the thyroid function test repeatedly done so that you know the patient has relapsed or not. Unfortunately, if the patient relapses, then again you have 3 choices depending on the patient. अब choices में क्या होता है कि if the patient has a single toxic nodule, तो what do you think will be the best treatment? उसमें कोई controversy नहीं है, वो तो हमें करना ही करना पड़ेगा. नहीं, see, the best thing is if you have a toxic nodule, वो खूब सारा थायरोक्सिन बना, अब उसका खूब सारा थायरोक्सिन बना दिया, तो what will happen is the TSH will suppress हो जाएगा ना. अब जब TSH suppress हो गया, this toxic nodule is autonomous, it is not dependent on TSH. What about the rest of the gland? It is not making any thyroxine because it is TSH dependent. So now if we give radioiodine to this patient, what will happen? Only nodule will take. Only nodule will take, rest of the thyroid will not take because वो काम ही नहीं कर रहा. So only selectively the nodule will be destroyed. So the rest of the gland will be preserved. Very good. Normally when we give radioiodine, this is one of the complications. These patients can go into hypothyroidism later on. क्योंकि जो हमने कराया है, आज वो cells injure हो गए हैं, over a period of time, a large number of patients can go into hypothyroidism. So once you give radioiodine, then again you have to keep the patient under your surveillance. तो वो प्रॉब्लम तो इसमें है ही नहीं, बिकॉज बाकी वाले टिश्यू ने तो लिया ही नहीं है. सो दैट इट इज वेरी गुड. अगर ऐसा निकल जाता है तो यही करना है. दूसरा, अगर कंप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं तो देन यू टेक अ ओपिनियन ऑफ अ थायराइड सर्जन, बिकॉज इट इज सो बिग, इट इज कंप्रेसिंग द वाइटल स्ट्रक्चर देयर, एनीथिंग कैन हैपन. तो फिर उसके अंदर फिर आपको एक सर्जरी की हमारी तरफ हम ज्यादा पुश हो जाते हैं. बट अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड हियर ओवर इयर्स इज कि मोस्ट ऑफ दीस पेशेंट्स आर ट्रीटेड विद एंटी थायराइड ड्रग्स. और आई थिंक बेसिक प्रैक्टिकल जो हम करते हैं वो यही है इसके अंदर. एंड हाउ टू स्टार्ट, वो आपको मैंने बता ही दिया. 10 to 40 आप स्टार्ट कर सकते हैं. एंड देन यू हैव टू मॉनिटर. वंस द पेशेंट स्टार्ट्स इंप्रूविंग, यू डोंट हैव टू परसिस्ट विद दैट सेम डोज. आप घटाते चले जाओगे. वंस द पेशेंट के अभी यहाँ तक आ गया पेशेंट, तो देन यू नीड नॉट गिव 30. देन यू कैन रिड्यूस द डोज टू मे बी 10 BD. फिर और नीचे आ गया FT4, देन यू कैन रिड्यूस टू 10 OD और 5 BD. और नीचे आ गया तो यू कैन ओनली कीप इट एट 5. और फिर उसके बाद 18 to 24 वीक्स एवरीथिंग रिमेन्स फाइन, एंड देन यू कैन मे बी ढाई करके आप इसको बंद कर सकते. दिस इज द बेसिक्स इसके जो थायरोटॉक्सिकोसिस की और उसके ये. दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लास, बेड साइड जैसे होता है कि जो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. थायराइड मैलिग्नेंसी, सी थायराइड मैलिग्नेंसी का तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड मैलिग्नेंसी विल नॉट प्रेजेंट एज ग्रेव्स डिजीज. इट इज अ डिफ्यूजली एनलार्ज्ड गोइटर. ये तो डिफ्यूजली है ना, तो थायराइड मैलिग्नेंसी में नहीं होगा. मैलिग्नेंसी में तो इट विल स्टार्ट एज अ नोड्यूल. देयर विल बी अ पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग एंड देन इट विल ग्रो. एंड इफ इट इज नॉट टेकिंग, इफ द मैलिग्नेंट nodule is non-functional, it will not be taking anything. And then yes, sometimes there are gray area जब आप clear नहीं होगे, do an FNAC. तो superficial है, and then you can do an FNAC, and then accordingly you can decide. Decide accordingly. अब कई बार करना पड़ता है, हमें डाउट होता है, तो then we going for an FNAC and we see whether it is a malignant or a non-malignant thing, and then plan the treatment accordingly. Role of radioactive iodine in diagnosis of this very. See, the thing is that if the patient comes to you with hypothyroidism, so only FT3, FT4 and TSH are here. But the problem with thyrotoxicosis is sometimes the patient has thyroiditis. Thyroiditis means that the thyroid gland becomes inflamed and the preformed जो पहले से स्टोर किया हुआ थायरोक्सिन ग्लैंड था, and because of whatever, there is a trauma, there is a viral infection, there is a drug induced injury to the thyroid, and suddenly those cells they release the preformed
pre-formed thyroid hormone. And the half-life of thyroid hormone जो आपका होता है is somewhere around 2 weeks. तो क्या होगा कि अगर ये इंजर हो गया है तो suddenly there will be increased levels of these hormones. So these patients can come to you with thyrotoxicosis. But there is a difference between Graves' disease and this thyrotoxicosis. This gland is over-functioning. ये ज़्यादा बना रहा है. This gland is injured. It has released the pre-formed thyroxine, but it is not making any more thyroxine. वो तो बीमार है, वो तो कर ही नहीं पा रहा. So now, if you do a thyroid scan, what will be the difference? This gland will show increased uptake. क्योंकि ज्यादा चाहिए इसको. जो डॉक्टर साहब ने बोला कि रेडियोआइडिन में दे दूं, तो क्या होगा? ये वाला ग्रेव्स वाला तो ज्यादा लेगा, ये वाला क्या करेगा? ये लेगा ही नहीं. So ideally speaking, if there is no contraindication and if the patient can afford, all patients of thyrotoxicosis जो first time आपके पास आए हैं, scan should be. Because ये कई बार हमने देखा है कि पेशेंट को थायराइडाइटिस हुआ, किसी ने उसको दवाई स्टार्ट कर दी और जब वो हमारे पास 6 महीने बाद आया तो वो हाइपोथायराइड था. बिकॉज वो थायराइडाइटिस तो ठीक हो गया, उसके बाद या तो वो ग्लैंड नॉर्मल हो गया या इतनी इंजरी होगी तो वो हाइपो में चला गया. वॉट एवर वन आउट ऑफ दीज टू थिंग्स. So then he did not require medicine. For what we do for these patients is कि जब उनको थायराइडाइटिस हुआ तो we usually treat them with beta blockers for a while. क्योंकि वो अपने आप ही कुछ हफ्ते में ठीक हो ही जाएगा. दैट इंजरी अगर नहीं भी ठीक होगा तो प्री फॉर्म्ड हार्मोन तो सारा रिलीज हो गया, नया इंजर्ड वाला बना ही नहीं रहा है. तो दे विल नॉट रिमेन इनटू थायरोटॉक्सिकोसिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आइदर द ग्लैंड विल नॉर्मलाइज और दे विल गो इनटू हाइपर. So these patients don't require treatment. So yes, it was a very pertinent question. Ideally speaking, all patients जब फर्स्ट टाइम आप उनको थायरोटॉक्सिक उसकी दवाई शुरू कर रहे हो तो एक स्कैन आइडियली करना चाहिए. हाँ, अगर पेशेंट को क्लियर कटी ग्रेव्स डिजीज है कि उसको ऑर्बिटोपैथी भी है, डर्मोपैथी भी है, सब कुछ ही आ गया, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी रेयर थिंग कि जिसमें आप बोल सकते हो कि आई एम प्रीटी श्योर कि ये तो ग्रेव्स डिजीज है, चलो मैं नहीं कराता. बिकॉज आपको फिर पेरिफेरी में एविडेंस मिल गया कि यार ये ग्रेव्स ही है. बट स्टिल आई थिंक बिकॉज आजकल कोई बहुत महंगा भी नहीं है और इजीली अवेलेबल है दिल्ली में तो एटलीस्ट, तो आई थिंक अ थायराइड स्कैन आइडियली शुड बी डन जब हम फर्स्ट टाइम पेशेंट को इवैल्यूएट कर रहे हैं इन थायरोटॉक्सिकोसिस, नॉट इन हाइपोथायराइडिज्म. TRAb antibody relation, positivity or negativity. Is there relation between the specific sign of Graves' disease with TRAb antibody positivity? See, TRAb antibodies की आपकी बड़ा एक क्वेश्चन है. TRAb antibodies का दो चीज. First of all, TRAb antibodies are not required in each and every patient of thyroid. TRAb antibodies are only required when after the scan and everything you still have some doubt about the diagnosis. बिकॉज जब आप क्लिनिकल हिस्ट्री ले लेते हो, पूरा एग्जामिन कर लेते हो, स्कैन करा लेते हो, T3, T4, TSH करा लेते हो, स्टिल अ माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट इन डिफरेंट सीरीज डिफरेंट, नॉर्मली 10-11% में फिर भी डाउट रह जाता है कि यार ये क्या है. तो इन दीज पेशेंट TRAb antibodies have a role in making a diagnosis. Because if they are positive in high titer, so then yes, your diagnosis of Graves' disease becomes more secure. तो नॉर्मली TRAb antibodies का कराने का कोई बहुत ज्यादा वैसे कोई रोल होता नहीं. आप बोलो कि मैं ट्रैब के हिसाब से इसको ट्रीट करूंगा या मैं ट्रैब के हिसाब से कुछ करूंगा, तो उसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता. बट येस, आफ्टर ऑल दीज बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस, इफ स्टिल अ डाउट रिमेन्स व्हिच रिमेन्स इन अ स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स, समवेयर अराउंड 10%, अभी भी हम क्लियर नहीं है कि क्या नहीं है. एंड वी हैड सच अ पेशेंट, I discussed with him, he's asking this question for your benefit. We discussed this patient. Ultimately, we had to get a TRAb done, and they came out to be positive. So we were more on a secure footing. Yes, we are dealing with the Graves' disease. वैसे अगर clear cut है तो I don't think it is required. And costly also. They cost around 2,000 rupees. What Dr. Vikram asked was, is there any correlation between TRAb and proptosis? See, it has been seen that the TRAb antibodies, they also go and act on the periorbital and orbital tissues. And it has been seen, higher the level of TRAb, higher the fat content and water content in the periorbital and orbital tissues. So अगर TRAb ज़्यादा होगा तो ज़्यादा probability है कि हमारे को orbital और periorbital fat और water content ज़्यादा हो तो eye signs ज़्यादा होगा. So that there is some correlation.